पगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जाए पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़िया बनाइया दी गलबात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बड़िया बनाइया दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी सरदारी ना होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी जी अतः साहब, please go ahead. Please unmute your mic first, Atta Saab, and start again. Ji, welcome everybody to this presentation of what we have called the KE Studios. हम लोग ये म्यूजिकल इवेंट कर रहे हैं और इसका मेन पर्पस ये है कि हम जो फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं पाकिस्तान में उनके लिए फंड रेजिंग करें और एक और प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया था वो ब्रेस्ट कैंसर की केयर में इम्प्रूवमेंट के लिए वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए किया था जो कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री सर्विसेज जो कि बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये म्यूजिक का जो कंपटीशन है उसका तरीका ये है कि अप टू 3 मिनट्स वीडियोस बहुत सारे यंग डॉक्टर्स और मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान ने अपलोड की हैं जो हम आपके सामने प्ले करेंगे और उनसे थोड़ी बहुत बात भी करेंगे और उसके बाद यूरी वर्डिक्ट देगी जो कि आप देख सकेंगे लाइव स्क्रीन के ऊपर और आखिर में हम कैश प्राइजेस देंगे। सबसे पहला बड़ा प्राइज जो है वो 50,000 रुपए का है। तो अब हम प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला ने मुझे यकीन दिलाया है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे हो रही है। अगरचे सादिया मेरी बेगम मेरे पास खड़ी हैं उनको ये अभी तक नजर नहीं आई, तो अब्दुल्ला विल प्रॉब्ली सॉर्ट दैट प्रॉब्लम आउट फॉर मी एंड फॉर माय पीस इन माय फैमिली। तो अब सबसे पहले मैं डॉक्टर ताबिंदा को इनवाइट करना चाहता हूं अगर वो ज्वाइन कर चुकी हैं और अगर वो ज्वाइन कर चुकी हैं तो अपनी प्रेजेंस शो करें बाय शाउटिंग आउट लाउड और रेजिंग हर हैंड। If she is not there, I think what I can probably do is invite Professor Mahmood Ayyaz जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, and he has been working day and night for the past few weeks for the relief of the flood affected people across Pakistan. लेकिन we are very grateful for him that he has spared some time for us. So Mahmood Sahab, welcome. Can you say a few words, but only a few words about what you've done for flood relief across Pakistan? Thank you, Mahmood Sahab.
Thank you very much, Atta Said Saab, for this great opportunity of joining all of you. And it's really a great occasion for me. As I just told you that I joined this university about 1.5 months back. And I joined this with a great pride and humility. But, you know, this brings a lot of sense of responsibility and duty towards King Edward Medical University. तो आते साथ ही सबसे पहला मेरा main focus था, it was to actually uplift the academics of the university, और उस पे मैं बहुत तेजी से काम करूं, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे. But at the same time एकदम से the flood came on, and the King Edward Medical University, since it is the leading and the premier university of the country, so we had to take a lead. तो हमने अपनी पहली 3 teams भिजवाई towards Rajanpur, DG Khan and Tonsar, the worst affected areas थे, वहां पे भिजवाई. And then we had the opportunity to be invited by the government of Sindh. उन्होंने हमारी कुछ relief services वहाँ पे देखी, तो उन्होंने खास तौर पर रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि किंग एडवर्ड की टीम्स को सिंध में भेजा जाए. तो इस वक्त हमारी 2 टीम्स हैं, कंडो यारो में सखर में और एक बख्श कटपुर रोरी है. ये 2 डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, और हमारी वहाँ पे 2 टीम्स हैं. दीज टीम्स आर प्राइमरली लोडेड विद गायनेकोलॉजिस्ट. सो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल एंड लेडी एचसन हॉस्पिटल, दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट. और हमारी 10 के करीब गायनेकोलॉजिस्ट इस वक्त वहाँ पर ऑन स्टेशन है, and they're there for the last 4 days and continuously working over there. और कोई वहाँ पे living conditions बहुत remarkable नहीं है, so they're putting their lives at risk for the lives of the countrymen, and I'm absolutely delighted and happy about the way they're working over there. और उसके साथ साथ हमने अपना एक relief fund कायम किया through the vice chancellor King Edward Medical University. Luckily King Edward Medical University और उसके vice chancellors की past credibility इतनी जबरदस्त रही हुई है कि the moment I launched that fund, I really do not know from wherever this funding is coming. और हम डेली इस काबिल हैं कि 10 लाख रुपए की दवाइयां और 10 लाख रुपए का राशन जो है हम डेली यहाँ पे ट्रक्स में लोड करके तो उनको भिजवा रहे हैं. और दूसरा आपका जो टॉपिक है अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, यू नो दैट ब्रेस्ट कैंसर इज एब्सोल्युटली रिमार्केबली राइजिंग इन इट्स इंसिडेंस इन पाकिस्तान. जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि 1 out of the 9 women in Pakistan, they are affected by this problem. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साउथ ईस्ट एशिया में ये हाईएस्ट रेट है, और सबसे बड़ा जो इसका इशू है ये कि यंगर वुमेन में बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में. और तो इसलिए आपकी जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स द फ्लड रिलीफ एंड टुवर्ड्स द diagnosis and the treatment of breast cancer, they're remarkable, and that is why I'm here with you, and you'll find me not lagging behind you in this effort. So जो मेरे से हो सकेगा और जो आप मुझे कहेंगे करने के लिए, that will be done inshallah. And thank you very much once again for inviting me today. Thank you Mahmood साहब, thank you for all your support and all your help. तो 1-2 बातें मैं बता दूं जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट आप उसे कह लीजिए जो इस स्क्रीन के लिए है, वो ये है कि जितने भी लोग इस स्क्रीन पर मौजूद हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि अपना वीडियो ऑन रखें और ऑडियो को म्यूट रखें अनलेस यू कॉल टू स्पीक. क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो उससे पता लगता है कि इंटरेक्शन हो रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं. वरना वो थोड़ा सा लाइफलेस हो जाता है अगर आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट को पढ़ रहे हो. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ये ख्याल रखिए कि कैमरा जो है वो अपने फेस लेवल पे रखिए, और जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेबली लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए और उसको स्टेबल सरफेस पे होना चाहिए, आप घुटनों पे मत रखिए. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत सारे दोस्तों का, खासतौर पे जो जूरी के मेंबर हैं जो कि मौजूद हैं. जैसे हम आगे चलेंगे उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा. और ताबिंदा मेरा ख्याल है अभी मौजूद नहीं है, उनकी बातचीत हम बाद के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. और अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो फ्लड रिलीफ के लिए हम पैसे रेज कर रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसका अकाउंट डिटेल्स आई होप के फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं एज वी कंटिन्यू. Thank you very much, Said Saab, and welcome everyone on behalf of KEMCA UK. I'm treasurer and trustee of KEMCA UK, and Alhamdulillah, we also appealed for the donations mainly from overseas Pakistani. And within few days, Alhamdulillah, we generated 32,000 pounds, which is a huge amount. And we are working in collaboration with Custom Healthcare Society based in Pakistan, who have logistics and ground support. And we have almost reached to all provinces in major flood affected areas. We have distributed ration, we have done relief camps, medical camps, as well as 2 tent villages. We have established of 100 tents in South Punjab, as well as 100 in interior Sindh. So alhamdulillah, we are doing well, and it's all because of the generous donations of the
Chemicalians mainly, and all the doctors from across the globe. Thank you very much. जी एक्सीलेंट। तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ब्रिटिश मॉनर्क, उनका इंतकाल हुआ है, और उनकी याद में और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी याद में, और आपको शायद ये भी याद होगा कि आज कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात है, तो हम एक अभी डिस्प्ले करेंगे स्टिल फोटोग्राफ जिसमें कि मलिका एलिजाबेथ के बारे में और उनकी पाकिस्तान के विजिट्स के बारे में कुछ तस्वीरें हैं। तो वी विल keep ourselves silent for a minute, and if Abdullah can display that still photograph, please. Thank you. जी थैंक यू अब्दुल्ला। मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि फेसबुक के ऊपर हम लाइव जा रहे हैं या नहीं। कोई आप में से कंफर्म कर सकता है, और उसका तरीका क्या है कंफर्म करने का, और ये भी बता दीजिए। जी जी अतर भाई जा रहे हैं लाइव। जी आप सो उसको कनेक्ट करने का क्या तरीका है, जो आपके पेज पे जाएं और फिर क्या करें? जी, उसका तरीका ये है कि फेसबुक में अगर आप कैप्स म्यूजिक क्लब सर्च करें तो उसका एक ऑफिशियल पेज है, तो उस पे जी लाइव स्ट्रीमिंग जा रही है, तो वो हमने ऑलरेडी शेयर की भी थी। इफ समवन इज हैविंग प्रॉब्लम clicking the link, then they can just go to their own Facebook and search KAPS Music Club. जी KAPS is KAPS जी Music Club, and they जी। can search it and they can enjoy the show live there. सो ये कैप्स म्यूजिक क्लब तो हमने खोला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अभी Sir, तक I'm लाइव going to share the link in the chat box as well. जी सही है। तो आप वो प्लीज भेज दीजिए ताकि हम जारी रख सकें। तो मेरा ख्याल है कि वी कैन probably start the actual competition. Let me introduce the jury before we do that. आप लोग उनको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजी हुसैन, और अपना आप हाथ बुलंद करके बता सकती हैं। शी इज अ वेरी टैलेंटेड यंग डॉक्टर एंड सिंगर। और इसके अलावा अशफाक खान साहब हैं, सीमा खान हैं जो कि क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हैं, खुद भी एफजे की ग्रेजुएट हैं और एक म्यूजिकल एकेडमी भी रन करती रही हैं पाकिस्तान में। और अली रज़ा हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो ईएनटी के कंसल्टेंट है यूके में, लेकिन बहुत अच्छे खुद भी गुलकार हैं। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हम पहली वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बताइए उस अब्दुल्ला के पहली वीडियो किसकी है, और क्या उनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली वीडियो है अरबाब सरफराज की, और अरबाब सरफराज जो हैं वो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। जी अरबाब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये बताइए आप कौन से साल में पढ़ते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट। जी वेलकम। और आपने सिर्फ 2 जुमले में बताइए कि किस पीस ऑफ म्यूजिक का इंतखाब किया और क्यों? सर मैंने एक पोइम सेलेक्ट की थी, आज बाजार में।
अब इसका जो कंटेंट है काफ़ी पावरफुल है और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें काफ़ी सेरेनिटी है, तो मुझे वैसे भी पॉइंट्स अच्छी लगती हैं गज़ल। जी एक्सलेंट, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट अब्दुल्ला। आज बाज़ार में पाव जो लांचलू, आज बाज़ार में पाव जो लांचलू, चश्मे नम जाने शो रीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पो शीदा काफी नहीं, आज बाज़ार में पाव जो लांचलू, दस्त अफ़शा चलो मस्तरक सा चलो, खाक बर सर चलो, खूं बदामा चलो, राह तक ता है सब शहर जाना चलो, आज बाज़ार में पाव जो लांचलू, आज बाज़ार में पाव जो लांचलू। Dr. Athar, can you unmute yourself? Gee, I'm sorry, I'm unmuted now. Very powerful poetry and excellent music and nicely sung. Razi Hussain, what's your total score? आप बताइए. मेरा total score है इस पर 10. If you want to see, I can show you as well. That is fine. Usama will upload it and Ashfaq Khan साहब, आपका total score क्या है? Well done, Brasser France. You have got 11 out of 20 today. Wonderful. Nice effort. ठीक है जी. Seema Khan. So I have given 17. I'm being generous with my marking in all the sections. ठीक, excellent. Ali Raza. Score 10. Ji, thank you very much. So we have Arbab has scored 38 out of a total of I think everybody scored out of 20. So क्योंकि ये 4 jurors हैं, तो ये कितना बनता है out of 20 80 जो 38 score है. और ये आप visual display देख रहे हैं, तो that was very good. I think you will all agree with me that it was beautiful. Sorry to interrupt. Can Ali Raza repeat the score? जी अली रजा, अपना score repeat कीजिए please. 10, please 10. 10 जी. So that comes to 48. That's very good. So that is very nice. I think we are ready for the next presentation. Can Osama, can you unshare your screen, please? और अगला presenter कौन है अब्दुल्ला, मुझे बताइए ताकि उनसे एक दो बातें करें. जी, next presenter is Khalid Anjum. जी खालिद अंजुम, आप आई होप के मौजूद हैं. अगर इतने सारे लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मजा आ जाए. अगर आपके पास वीडियो है तो उसको ऑन करें.
और ये बताइए कि आपने किस पीस ऑफ म्यूजिक का इंतखाब किया है और क्यों? सर मैंने क्लासिकल में जो ठुमरी गाया है सर, और क्लासिकल में काफ़ी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस है बाकी सॉन्ग्स में, इस वजह से मैंने क्लासिकल में ठुमरी गाया। जी एक्सीलेंट, बहुत आला। आप कहाँ पढ़ते याद हैं और दिया कौन किया से? वेरी नाइस। आप कहाँ पढ़ते हैं और किस साल में मैं पढ़ते हैं? किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। आई एम सॉरी, किस यूनिवर्सिटी में? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सर। सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो अब्दुल्ला, कैन वी गो ऑन टू प्ले द म्यूजिक? याद पिया किया याद पिया किया याद पिया किया है राम, याद पिया किया ये दुख सहाना जाए राम, है राम, ये दुख सहाना जाए राम, है राम, याद पिया किया है राम, याद पिया किया बैर कुयलिया कोक सुनाए बैर कुयलिया बैर कुयलिया कोक सुनाए मुझ बिरहंसा जियारा जलाए पी बिन रहा ना जाए है राम, याद पिया किया है राम, याद पिया किया Gee, that was excellent. I was completely bowled over and won over. Mashallah, very well sung. तो ये बताइए, हमारे जो क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हैं सीमा खान, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी और उसके साथ ही स्कोर भी बताइएगा खालिद अंजुम के लिए। पहले मैं स्कोर बता देती हूँ। जी It's 18 जी and I won't go into at this moment के काटे एक दो क्यों। मैंने तो इनको सुर में और लय में हर चीज में फुल मार्क्स दिए हैं, चॉइस ऑफ सॉन्ग में भी। प्रेजेंटेशन में मैं बता देती हूँ, अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छी थी, which is part of the presentation, but I would have liked to see his video, you know, expressing while he was singing. अदरवाइज पूछना मैं इनसे ये चाहूंगी कि इन्होंने क्लासिकल की कोई ट्रेनिंग ली हुई है, और अगर ली है तो कितना अरसा ली है। कंपेयर टू दैट बड़े मुश्किल उसको हाथ डाला है इन्होंने, और सुरों को बहुत अच्छा निभाया है। जी खालिद बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू। मैंने एज सच कोई क्लासिकल की क्लासेस तो नहीं रही, लेकिन मेरे फादर सिंगिंग करते हैं और मोस्टली मैं नुसरत साहब को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। बाकी क्लासिकल जो भी है मोस्टली मैं क्लासिकल सिंगर्स को ही सुनता हूँ, और सुन के मैंने ये प्रैक्टिस की, बाकी ऐसा कोई क्लास वार नहीं लिए। जी थैंक यू वेरी मच खालिद। राजी, आपने क्या स्कोर किया है? मेरा स्कोर है 15।
और अशफाक खान साहब? जी वेल डन खालिद, वेल डन। 14 मेरा स्कोर है आज इनके लिए। जी, और एक्सीलेंट। अली रजा? मेरा स्कोर 13 है। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो ये ख्याल रखिएगा कि इसमें जो सुर, लय और चॉइस ऑफ सॉन्ग के अलावा प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स हैं। तो खालिद has gone ahead with 60 marks out of 80. So well done खालिद। तो इससे पहले कि हम अगली वीडियो प्रेजेंट करें, मेरा ख्याल है उसामा, if you can unshare the screen, and तबिंदा दुगल जो कि प्रेसिडेंट हैं केमका यूके की, वो स्क्रीन पे आ गई हैं। तो तबिंदा वेलकम, और ये बताइए कि केमका की जो इस वक्त सबसे बड़ी एफर्ट है वो फ्लड रिलीफ की है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है अभी तक? बहुत मुख्तसर और थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए बताइए प्लीज। जी, थैंक यू अथर, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आई हैड टू डू समथिंग फॉर माय मदर, तो मुझे देर होगी थोड़ी सी। इसका जो फ्लड रिलीफ का हमारा सिलसिला चला है, दैट वाज रियली सक्सेसफुल। और यू नो, एक बंदे का काम नहीं होता, ये पूरी टीम काम करती है, और डोनर्स जब तक डोनेशंस नहीं देंगे तो नहीं। सो वी रेज्ड अ वेरी गुड कैंपेन, थैंक यू टू आवर ट्रेजरर एंड ऑल द पीपल हु डोनेटेड। तो हमने शुरू किया था विद 3,000 पाउंड टारगेट, एंड सो फार वी हैव एक्सीडेड 30,000, so we are at 33,000. और उसमें से we have sent more than half of that already. We've got 100 tents, 2 tent villages में डिवाइड हुआ है, एक राजनपुर में और एक वो सिंध में डिवाइड हुआ है, जो हमने टेंट विलेजेस किए हैं। And the plan is to continue to sponsor these people through their intermediate and their final rehab so that we can build houses for them. तो एक बड़े जज्बे से हमने ये शुरू किया, and we were working in collaboration with one of our classmates, Asif Jha, जो कि वहाँ पर काम करते हैं, so it wouldn't have been possible without him, and of course the donors. So thank you to everybody who donated and who worked with us. थैंक यू वेरी मच ताबिंदा। अब्दुल्ला, ये बताइए कि हमने एक वीडियो बनाई है जो हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, वो आप प्ले कर सकते हैं? जी, मैं अभी प्ले करता हूँ। जी, दैट वाज एक्सीलेंट, थैंक यू। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में जो अकाउंट नंबर्स भी डिस्प्ले किए गए थे, वो लोग जो कि फेसबुक पे देख रहे हैं, वो भी यू नो, इफ दे कैन डोनेट जेनरसली फॉर द फ्लड अफेक्टेड इन पाकिस्तान, दैट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब्दुल्ला, वो कौन है और उनका मुझे नाम बताइए। उनका नाम है हमास फरहत। जी, हमास, आर यू देयर? और आप ये बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं और कौन से साल में हैं और कौन सी पीस ऑफ म्यूजिक आप प्ले कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 4th ईयर MBBS में पढ़ता हूँ पुंछ मेडिकल कॉलेज रावला कोट से। तो जो गाने मैंने चूज़ किए हैं वो है अरिजीत सिंह का एक आयत, और उसके साथ मैंने मेडले किया है हमारे अली सेठी, जो द ग्रेट अली सेठी का चांदनी रात, क्योंकि इन दोनों की मुझे मेलोडी बहुत पसंद है और जैसे इन्होंने गाया है, मतलब इट रियली गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट व्हेनेवर यू हियर दैट, तो इसलिए मैंने इनको चूज किया। ओके, लेट्स प्ले द म्यूजिक अब्दुल्ला।
हो गई है कायम, तू हो गई है रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात। Gee, that is excellent. Thank you very much. Very nicely sung. ये बताइए राजी, आपने हमास के लिए क्या स्कोर रखा है? हाँ, हमास के लिए स्कोर है 9. Very good. अशफाक साहब? हमास very nice voice texture and keep it up. बहुत मजे का आपका texture है. मैंने आपको 10 नंबर दिए out of 20 today. Keep it up. Wonderful. Thank you, sir. Thank you. Thank you. सिम्बा खान? 16. Very good. और अली रजा भाई? 10. So that is scoring from all the jurors. So total score of 45 out of 80. और आप देख सकते हैं, मतलब visual display is disappeared, but that's fine. तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो खालिद अंजुम जो है वो लीड कर रहे हैं. Let's see how this shapes up. तो I think we should probably go on to the next presenter. और next presenter कौन है? गालिबन हसनैन है. जी, हसनैन अली. जी हसनैन अली, आप बताइए कि आप कौन से साल में पढ़ते हैं और कहाँ पर, और आपने कौन से पीस ऑफ म्यूजिक का इंतखाब किया है? अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी फरमाइए, आप बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन से साल में? सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर. जी एक्सीलेंट. और आप अपना कौन सा म्यूजिक पेश कर रहे हैं और आपने क्यों उसको इंतखाब किया है? कहाँ हो तुम चले वो मोहब्बत का तकाजा है. मैंने ये सॉन्ग सेलेक्ट किया सर कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर, क्योंकि इसमें मोस्टली क्लासिकल वो वचन दे रहे हैं सर, तो मैंने कोशिश की कि जी एक्सीलेंट. आपकी आवाज अगर यहाँ पे बहुत अच्छी रिसेप्शन नहीं है, लेकिन आई थिंक वी गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट यू वर सेइंग. अब्दुल्ला, कैन वी प्ले द म्यूजिक? Yes, we can. कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारे
सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर, तुम है दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। Excellent. Thank you very much. That was very nice, very evocative, mashallah. Well done. Let's say कि score क्या हुआ है? राजी, आप बताइए. My score is 9 for Hasnain. Very nice. Ashfaq साहब. हसनैन, वेरी नाइस वॉइस टेक्सचर। behzad लखनवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छी एफर्ट आपकी, और मैं आपको इसके 10 नंबर दूंगा 20 में से प्लीज। वंडरफुल, कीप इट अप। जी, सीमा खान आप बताइए. 19 from my side. थोड़ा सा बस कुछ अल्फाज की अदायगी में एक्सेंट में मसला आया था, और अगर ज्यादा फ्रंट फेसिंग इनका एक्सप्रेशन होता तो बेहतर होता, उसके लिए बस 1 मार्क काटा है मैंने। जी, एक्सीलेंट। मैंने नोट किया है सीमा कि आप प्रेजेंटेशन और वीडियो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी तवज्जो दे रही हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। अली रजा आप बताइए। 15 मार्क्स दिए हैं। I really liked it. There was no background music, and to sing this sort of song is not easy without music. मेरा ख्याल है अली आपने भी एक गाना गाया या नहीं अपने चैनल के ऊपर? मैंने इस तरह का गाना नहीं गाया। It's very difficult to sing without music. नहीं, आप YouTube चैनल के ऊपर? हाँ जी, मैंने काफी गाए हैं उसमें। जी, excellent. That's very nice. So total score is. Please, can you repeat your score? जी, अली रजा 15. Okay, very nice. So far लगता है कि Khalid Anjum is ahead with 60 and Hasnan Ali is in the second place with 15. So well done to you. तो अगली प्रेजेंटेशन है समीर भट्ट की। समीर आप मौजूद हैं तो आप बताइए, अपना तारुफ करवाइए 2 लफ्जों में, कौन सा कॉलेज, कौन सा साल और कौन सा गाना? Sir, am I audible? जी, you are audible. Sir, basically I have recently graduated from KE and right now I'm a house officer at my hospital. In general मेरा जो forte है that is eastern and western pop music, लेकिन today जो song मैंने जो choose किया है वो basically मोहम्मद रफ़ी साहब का एक song है. The reason is कि बचपन से ही he has been my idol, और बचपन में जो कुछ vocal training ली वो भी उन्हीं के गानों पर मैंने ज़्यादा ली, तो that's why I just wanted to pay a tribute to my idol. जी, excellent. So let's go ahead. बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा
Gee, that was outstanding. Very well done. Let's go to the score. ये बताइए राजी के आपके क्या स्कोर है? My score for Sameer is 16. Very nice. अशफाक साहब? समीर बहुत खूब, हम सब भी रफ़ी साहब के बहुत शहदाई हैं। जब भी आप रफ़ी साहब को कोई भी ट्रिब्यूट पेश करें और उनको कोई भी गाना गाएं किसी भी कंसर्ट में कहीं पर भी, और चूंकि आप गिटार भी बजा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है गिटार के साथ गाना, तो आई रियली लाइक्ड इट। मदन मोहन साहब की ये कंपोजिशन थी और हंसते जख्म ये फिल्म का नाम था और कैफी आजमी साहब ने इसको लिखा था। तो इट्स जस्ट अ टिप कि जब भी आप कहीं परफॉर्म करें, क्योंकि मैं अंदाजा कर सकता हूँ आप कितना अच्छा परफॉर्म करते होंगे गिटार के साथ लाइव म्यूजिक में, तो जब आप ट्रिब्यूट पेश करें तो कंपोजर और शायर को इंक्लूड कर लें तो उनको भी ट्रिब्यूट पेश हो जाएगा। वेल डन, और मैं आपको 14 नंबर दे रहा हूँ आउट ऑफ 20। कीप इट जी अप। थैंक यू अशफाक साहब। सीमा खान आपका स्कोर? जी मेरा स्कोर है 17। That's excellent. Ali Raza? मेरा स्कोर है 14। 14. Gee, that's excellent. So that is 61, which is actually puts Sameer ahead of everybody else. 1 mark ahead of Khalid Anjum. So as of now, Sameer is at the front with 61, followed by Khalid Anjum at 60, followed by Hasnan Ali at 53. So I think this competition is hotting up, which I quite like. We are exactly halfway through the competition. Usama, if you can unshare the screen, what I would like to do at this point is to invite Shafiq Gill bhai, जो कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, यूके में काम करते हैं, obviously KE के graduate हैं, और over the past few years he has done a lot of work to raise funds and to contribute towards developing of the immunohistochemistry service at the KE pathology lab. आपको ये शायद अंदाजा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो आप जो रिसेप्टर्स हैं उनको जब determine करते हैं तो that can really make a difference between the treatment that these patients get, and it can improve survival if you give the right treatment. Shafiq bhai, are you there, and can you tell us कि आपने ये सर्विस कहाँ तक डेवलप की है और क्या अचीवमेंट्स हैं? बहुत मुख्तसर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अतर भाई। जी हमने ये कोई तकरीबन 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें एज यू मेंशन राइटली कि जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर जिनकी डायग्नोसिस होती है उनको ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2 टेस्टिंग और बाकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्कैनिंग चाहिए होती है, ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें मजीद ट्रीटमेंट कौन सी मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं। और एज प्रोफेसर महमूद अय्याज मेंशन, आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर इज बिकमिंग जस्ट लाइक एन एपिडेमिक इन पाकिस्तान, और क्योंकि ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होता है तो इसका बहुत डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये फैमिलीज़ को यूजली जो छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है इन द सेंस कि अगर यंग डेथ्स होती हैं तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है उससे। और ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली एक ट्रीटेबल बीमारी है, तो इस प्रोजेक्ट ने हमें बहुत हेल्प किया है। इसमें हमने अबाउट कोई 225 लोगों के टेस्ट अभी कर लिए हैं और इस साल भी हम फंड रेज कर रहे हैं ताकि हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकें और पेशेंट्स की हेल्प करें। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि भी जनरसली इसमें डोनेट करें। शुक्रिया जी, वेरी नाइस, थैंक यू शफीक भाई। आप गालिबन देख सकेंगे कि जो फेसबुक पेज है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है वहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं, सो डोनेट जनरसली। ऑल्सो अगर शफीक भाई आप या और अब्दुल्ला आप चैट बॉक्स में बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे सकें तो दैट विल बी रियली नाइस। तो ये बताइए कि अगले प्रेजेंटर कौन है अब्दुल्ला, और वो क्या, ताकि उनसे बात करें हम। जी अगले प्रेजेंटर हैं नूरुल ऐन। जी नूरुल ऐन, नूरुल ऐन आप ये बताइए कि आप कौन से साल में हैं, किस कॉलेज में, और आपकी प्रेजेंटेशन क्या है? जी आप ऑडिबल हैं, अगर आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप कैरी ऑन प्लीज। Sir, I'm Nurul Ain from 3rd year MBBS in Edinburgh Medical University. Excellent. ये बताइए कि आपने क्या सॉन्ग सिलेक्ट किया है? Sir, I have selected Mo Mo Ke Dhage by Monali Thakur, and it kind of represents my journey through the music club. I was really shy with the high notes, so I eventually developed them, and this shows my journey and progress. So I hope you like it. Thank you very much. Let's play the music.
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। Athar, you need to unmute yourself. I'm sorry, I was on the mute. I thought Razi was on the mute. Razi, आपने कितने नंबर दिए? न्यूरोलैंड के लिए मेरा स्कोर है 8. 8. अशफाक साहब? जी मेरा स्कोर है 9. सीमा खान? 15. Very nice. अली रजा? अली रजा, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। मेरा स्कोर है 10. आपका स्कोर है 10. Thank you. So that gives Nurulan a total of 42, which sounds quite nice. That's excellent. तो अब हमारे पास अभी 4 competitors बाकी हैं, लेकिन at this point मैं invite करना चाहता हूँ Hassan Bajwa ko, who's the moving spirit behind the KE Music Society. He's done a lot of work, sometimes against odds, but he has succeeded, I think, beyond measure. So congratulations to Hassan Bajwa. Hassan, आप मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि आप मौजूद हैं और आपके जो ट्विन ब्रदर हैं वो भी आपके साथ बैठे हैं, आपके डॉपलगैंगर जो हैं। So welcome to Hassan and Huzaifa. I met these 2 young men in Lahore at KE when I was last there, and I was impressed in their brilliance, both in academics and also in music. So Hassan, welcome. आप अपना 2 जुमलों में तारुफ करवाइए, फिर आपका एक वीडियो चलाते हैं. Hassan has decided not to actually take part in the competition, so to avoid any conflict of interest. लेकिन ये कि he's been the moving spirit, as I said, behind all of this. Hassan, अपना छोटा सा तारुफ करवा दीजिए, please. Thank you, Dr. Athar, for being so generous in his words about us. I am Mohammad Hassan Bajwa, and with me is Huzaifa Habib. We are the co-heads of the KAPS Music Club at King Edward Medical University. हम म्यूजिक कर रहे हैं since first year, और कोई हमें पूछता है कि आप म्यूजिक क्यों कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि it's like a catharsis for us, और catharsis we know कि medical studies में in particular कितना ज़रूरी होता है. तो
that's about it. और इसके साथ we are very enthusiastic about music and promoting it as something as a source of catharsis for medical students और अपने college में भी और outside भी. So I think we've carried this enthusiasm for 5 years, or now we've been trusted with the responsibility of being the heads. And I would like to especially thank KEMCA UK, especially Dr. Sethi, for providing us this amazing opportunity. And I think that this collaboration between KEMCA UK and our music club has been great. And I hope that it continues in this year as well as aane wale saalon mein bhi. Yeah, thank you very much. Let's play Hassan's video, Abdullah. नाथ मुल्ला पंडित जोशी नाथ इल्म कुरानी जद अहमद अहद विखाली दिता जद अहमद आदमी खाली दिता इल्म तमाम की तूने हासिल बाहू इल्म तमाम की तूने हासिल बाहू ठप किताब आसमानी हूँ मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मेरा कौन पिछाड़े रास्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ मकान उसका है मकान उसका है दिल की कीमतों में खुदा जाने मकान में दिल कहाँ है कहाँ है कहाँ है मकान में दिल कहाँ है मकान में दिल कहाँ है मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ सरमस्ता मैं सूफी हूँ Gee, that was amazing. Just wonderful. Thank you very much, Hassan. I think the next presenter is Bibi Mariam, and Bibi is there. Hello, Bibi, how are you? Assalamu alaikum, sir. I'm fine. Am I audible? जी, you're very audible. Thank you for joining. ये बताइए कि आप कौन से साल में कहाँ पढ़ती हैं और कौन सा piece of music play करेंगी? सर मैं 3rd year की स्टूडेंट हूँ एट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद और मैंने सॉन्ग गाया है एक प्यार का नगमा है मेरी फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर और उनके मैं सॉन्ग सुनती हूँ इट्स वन ऑफ देम So I think that song belongs to the era before you were born. That belongs to our era, and it's therefore very evocative for us. So thank you for choosing it. So go ahead, Abdullah. एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान तू आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Was very nice. Like I said, belongs to our time, therefore very evocative for us. Razi, आपने कितने नंबर दिए बीबी को? मरियम बहुत खूबसूरत। Okay, very good. और अशफाक खान जी साहब? मरियम, बहुत अच्छा तासुर छोड़ा आपकी आवाज ने, खुशगलू हैं आप। मैंने भी आपको 13 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 20 एंड कीप इट अप, वंडरफुल। Excellent. सीमा खान? 15 from me. अच्छा, well done. अली रजा? मेरी तरफ से 10। आपकी तरफ से 10 नंबर है. So that gives her a total of 52 marks. So she is in the reckoning, I think, among the front runners. तो इसके बाद अगले प्रेजेंटर जो हैं वो हैं मोहसिन भट्टी. मोहसिन भट्टी, आप मौजूद हैं? अगर हैं तो अपना तारुफ करवाइए. मेडिकल कॉलेज कौन सा साल है और कौन सा गाना है? Assalamu alaikum sir. I'm currently studying in Government Khaja Mohammed Safdar Medical College Sialkot और मैं 3rd year MBBS में पढ़ रहा हूँ. For me singing is a passion और आज जो मैंने इस competition के लिए एक effort put की थी वो थी सावन भी तो जाए पे हरवा, sung by शफकत अमानत अली खान. So I made an effort to sing that song. Excellent, very good. Let's play the music. सावन भी तो जाए पे हरवा, सावन भी तो जाए पे हरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोलना, मोरा सैया मुझसे बोलना, मैं लाख जतन कर हारे,
लाख जतन कर हान रही मोरा सैया मुझसे बोलना मोरा सैया मुझसे बोलना Gee, that was very, very nice, Mohsin. Well done. Thank you. Let's go for the scores. Raju San, what did you score for Mohsin Bhatti? Mohsin Bhatti के लिए 12. और अशफाक साहब? मोहसिन वेल डन, कमाच के लिए आपने एफर्ट की, इट्स अ ब्रेव स्टेप, वंडरफुल। और मुझे मजेदार बात ये लगी, जहां पर आपने रिकॉर्ड किया है म्यूजिक अपना, वहां पर आज आप भी बैठे हुए हैं, एम आई राइट? जी सर, उस जगह पर मैं बैठा हूँ सर। आई थिंक आपकी फेवरेट प्लेस है, कीप इट अप। और मैं जी आपको सर। इसके आज 12 नंबर दूंगा, वेल डन एंड कीप इट अप। Thank you, Ashfaq साहब. Good observation. Seema Khan, आपने कितने नंबर दिए? मैंने 18. Okay, that's very good. So that is a very good score from Seema. Ali Raza, आपने कितने नंबर दिए? मैंने 15. आपने 15 नंबर दिए. So that makes a total of 57. So इस वक्त पे जो front runners हैं, therefore they are Khalid Anjum, Sameer Bhatt and Mohsin Bhatti. You can see on the visual display. So this seems like a very hotly contested tournament. And let's go to the next presenter जो है Muin Haider. Muin Haider, आप मौजूद हैं तो अपना तारुफ करवाइए, मेडिकल कॉलेज, कौन सा साल और कौन सा piece of music? Assalamu alaikum. Am I audible? Ji, you are audible. Go ahead. Ji, myself Moin Haider. I am a fourth year medical student from Service Institute of Medical Sciences, Lahore. Talking about my song, I'm more into semi-classical ragas and thumris and that stuff. So I've chosen the song Aaoge Jab Tum Ho Sajna. It's a rag-based song, and I've chosen it due to its melody and the lyrics are conventional. Gee, very nice. Abdullah, let's hear the music now. नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, पानी सर मांगा गा सनी, मेरे घर निधनी Papa mama dada marmaga gamara niza sani pama maga sare ga sari angna phule kile mani sare ga sare papa mama ga angna
That was excellent, outstanding, well done, mashallah. तो राजी आपने क्या स्कोर किया मोइन हैदर के लिए? मोइन हैदर बहुत खूब, मेरी तरफ से 20. Oh, amazing, very good. So he has broken the barrier. Well done to Moin हैदर. अशफाक साहब? जी मोइन, बहुत मजा आया सुन के आपको, बहुत अच्छी कंपोजिशन, बहुत अच्छा आपने रहा, और इसके साथ आपके जो कोलीग हैं उनको भी दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा उन्होंने आपके साथ प्ले किया. मैंने आपको 16 नंबर दिया आउट ऑफ 20 एंड कीप इट अप, वंडरफुल, बहुत मजा सीमा आया. खान? जी, बिफोर आई गिव माय स्कोर, मैं इनकी प्रेजेंटेशन मुझे मुश्किल हो रहा था मार्क्स कहाँ से काटूं. ही वाज एंजॉयिंग, ही वाज सिंगिंग विद कॉन्फिडेंस, सुर भी बिल्कुल ठीक, लय इनको कंट्रोल करके रखी थ्रू आउट इन्होंने, और लिमिटेड टाइम के अंदर गाने को जिस तरह खोला, उठाया, आलाप भी दे दिया, सुर भी सुना दिए, सारा कुछ उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव किया. इट्स वेरी डिफिकल्ट इन 3 minutes, within 3 minutes. 20 from my side. Amazing. So that is an excellent score. He's trying to break the record. Let's see what Ali Raza will say now. Before I give the marks, Moin, well done, very well sung. और मेरी तरफ से special, please pass my remarks to your guitarist. As a guitarist, I can play it very well. तो मैं आपके maximum आपको number देंगे अपनी तरफ से 17 marks. Gee, excellent, well done. So that puts Moin Haider in the lead, very clear lead. He has scored 73 out of 80. So let's see what the last presenter has to present, and then we'll have the result. So आखिरी presenter जो है वो हिरा सईद हैं. हिरा सईद, आप कौन से कॉलेज में कौन से साल में पढ़ती हैं और क्या पेश कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, can you hear me? जी, आपकी आवाज आ रही है. आप जल्दी से बताइए कि आप कौन से साल में पढ़ती हैं, कौन से मेडिकल कॉलेज में, और क्या पेश कर रही हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही इस वक्त. अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला, can we play the music and we'll talk to Hira afterwards. MBBS at Al-Alim Medical. Yes, I am a student of third year MBBS at Al-Alim Medical. I selected this song because I think it's a beautiful composition, and I have selected Madam Noor Jahan's songs, Jadon Holi Ji Lenda Mera Naam. Very nice. Punjabi song, that would be lovely to hear. Abdullah? सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल एहो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एडे कुट के ना फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों हौली जी लेना मेरा नाम, हो जदों हौली जी लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों हौली जी लेना मेरा नाम, मरदा दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मुहब्बता दे कॉलेजां दे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों हौली जी लेना मेरा नाम. So thank you, Hira. That was lovely. Let's go to the score sheet. So Razi, आपने कितने नंबर दिए? हिरा के लिए 9. अशफाक साहब? हीरा चूंकि हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है, तो मैं आप सब लोगों से, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की है. तो आप में से कोई भी विनर और लूजर नहीं है, आप सब विनर हैं. और मैं आज हीरा को 10 नंबर देना चाहता हूँ आउट ऑफ 20. वेल डन हीरा, एंड कीप इट अप.
Thank you, Ashaq sir, for very good, very nice comment and very well said. Seema Khan. 17 from my side, and I would also like to point you to presentation. इन्होंने मुश्किल गाने को हाथ डाला, इसमें वेरिएशन बहुत है सुरों की नीचे और ऊपर, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है. सजेशन एडवाइस जो समझे, एक्सप्रेशन में आंखों का एक्सप्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपने थ्रू आउट अपनी आंखें इसमें खुद एंजॉय कर रही होंगी, बंद रखी थी, मगर आंखों के एक्सप्रेशंस के ऊपर भी थोड़ा जोर दीजिए. लेकिन गुड एफर्ट, ग्रेट सिंगिंग, थैंक यू. Excellent, well done. Or Ali Raza, last score for the last presenter of the whole competition. Ali Raza. This is not an easy song to sing, especially such a well-known tune. Well done for taking this step. So for me, it's 12 marks. That's 12. So that makes it a total of 48. So we have the result, ladies and gentlemen. You can see on your screen in the lead is with how many marks? So with clearly in the lead is 73 marks is Muin Haider. So he gets the first prize. Yeah, Muin Haider के लिए. और second number के ऊपर है Samir Butt with 61 marks. और third number के ऊपर है Khalid Hussain with 60 marks. So well done. It was amazing, a tremendous competition. इतनी ज़्यादा entries थी, 100 से ज़्यादा, और सबका मेयार बहुत अच्छा था. So we are very grateful for all who took part in the competition, and especially to the winners. Please remember that. Please remember we are doing it for a noble cause. We are raising funds for those affected with floods in Pakistan, and also trying to collect funds for the project of breast cancer diagnostic tests at the King Edward Medical University. So I'm pleased to announce that we have the international celebrity Ali Sethi joining us. If we can unshare the screen and we can have a quick chat with Ali. Ali, are you there? Gee, I am. Can you hear me? We can hear you. We can see you. It's early morning in New York, where I suppose you are. And yes. Have you had your coffee yet, or are you still sleepy? I am having it as we are. So Ali, जो KE के बच्चे थे और medical students across Pakistan, they have been kind of buzz with excitement over the past several months when they knew that you would be joining, and it is a dream come true. Thank you very much for making it to this meeting and this competition. ये बताइए कि एक दो बातें मैं आपसे पूछता हूँ, फिर मेरा ख्याल है I will give a chance to kids from KE to ask you 1 or 2 questions as well. ये बताइए कि आपने, जहाँ तक मुझे समझ है कि पहले आपने वेस्टर्न म्यूजिक से आगाज किया और उसके बाद आपने ट्रेनिंग की, आई डोंट नो फॉर्मली की क्लासिकल म्यूजिक में, एंड ended up doing fusion music, which has been an outstanding success across the world. I don't know in history anybody who's been so popular across all continents among all people. So Ali, ये बताइए कि आपने किस तरह की ट्रेनिंग की है, वेस्टर्न की है, क्लासिकल की है, दोनों की है, और फ्यूजन कैसे की है? Gee, thank you for having me, first of all. I'm very happy to be here. I believe in the more time I spend in the arts, the more I believe that the sciences are very, very important. Actually, the more I was at Brown University yesterday doing a part of a panel and doing a performance. And one of the people I met there was a fellow Pakistani Lahori musician who also is a graduate of King Edward and is simultaneously practicing medicine and also thinking about, seriously thinking about music and about South Asian classical music. And what is very interesting, is it okay if I speak in both Urdu and English? जी बिल्कुल, and Punjabi as well, if possible. Wonderful, wonderful. तो जो मुझे सबसे वहाँ मजे की बात लगी वो कल ये थी कि we were all trying to find, we were there for the Watson Institute, which is Brown University's institute affiliated with South Asia Center. और वो कल हम लोग panelists from Nepal, from Bangladesh, from India, from Pakistan,
and China experts. We were all gathered together. We were thinking about ways in which to connect the sciences and the arts. And I would like to say that for me, the great delight of formally studying Rag music has been to be connected with the scientific aspect of our music. इसमें ना सिर्फ उसकी जो थियरी है, और जैसे कि सीमा जी ने भी कहा, ये गाना अभी जो परफॉर्म किया वो राग दरबारी में है, वो मुश्किल गाना है, उसका एक पैटर्निंग है, उसकी अपनी एक क्या कहना चाहिए, इट हैज अ काइंड ऑफ ग्रामर, एक्सपोजिशन में ग्रामर है उसकी, कि कहाँ पे आपने कौन से सुर जो हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है वगैरह, एंड फिर उसकी इम्प्लीकेशंस के उसका जो इफेक्ट है, the effect it creates on people, the effect it creates on an audience. ये सब चीजें जो हैं, ये बाकायदा अगर आप इनके साथ engaged रहे तो then they open up all kinds of avenues for you. I studied formally in America as an undergraduate. I studied the historical aspects of South Asian literatures, of South Asian languages, sociology, history, economics. I studied all of those things. And when I pursued music with Ustad Nasiruddin Sami, who comes from the great Kawal Bacha family of musicians, I was connecting the arts with the sciences that I had studied. Yani, jo liberal arts ek approach hai, which is ke the arts have a connection with the sciences, and that the sciences also have mystical, artistic, philosophical dimensions. I think this is a thinking jo ke hamare यहाँ बहुत until the sort of pre-colonial moment बहुत common थी. अभी भी आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ बड़े musicians हैं, जिस तरह अमीर खुसरो हैं जिनका जिक्र होता है, जिनको हम कहते हैं कि he invented the sitar, he invented the tabla. He was also a linguist, right? He was also a poet. So he was a polymath. He was somebody who was doing experiments all the time. And I think that we are again at that kind of moment in our world today, जहाँ पे जिस तरह यहाँ जो students हैं, जो बच्चे perform कर रहे हैं, through the internet, they are connected with the entire world. And they are listening to music from all over the world, and they are connected to ideas and to stimulus and sources of stimulus from all over the world. And yet there is also an opportunity to be connected with something very anciently local and rigorous and very developed in its own way, which is what we think of as traditional craft. I would say that going forward, especially for medical students, I would urge you to think about the connections between music and neuroscience, music and healing, music and self-care, music and wellness. These are all huge concerns in the Western world today, and increasingly in the entire globe. Almost everywhere I go, performing in the United States, engaging with audiences, there seems to be increasingly a role that music is playing in people's lives, and not just in the lives of Pakistani, Indian, Bangladeshi audiences, but in the lives of audiences in general. Music, the relationship between music and mind, music and spirit, music and soul, this is something that I think medical students especially are in a wonderfully fertile place and position in life to explore. And I would urge you to seize on this opportunity. Don't think of music as just a hobby in your life and medicine as this other thing that is separate from it. Think of the connections between these things. That will also make you a happier person, I believe, because you will be able to integrate your passions and your pursuits. That's आपके excellent. सवाल का वैसे मैंने जवाब नहीं दिया, सॉरी, मुझे भी ख्याल आया. जी, अगर दे दीजिए तो ठीक है, ना भी दें तो हम अगला सवाल पूछते हैं. आप अगला सवाल पूछिए. तो ये बताइए, मैं दो सवाल मेरा ख्याल है कि पूछना चाहूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली. राजी, do you have a question first, and then maybe Hassan Bajwa for Ali. Razi, go ahead if you have a question. If not, then or a comment, either. Razi is a young doctor, very talented. She in medicine, obviously, and also in music. Razi, go ahead. Hello, Ali. I'm such a big fan. I am having palpitations right now, but I'll just ignore it because दोबारा पता नहीं आपसे बात हो के ना. Ali, what do you think? How much privilege changes the life for an aspiring artist?
Privilege? Do you mean economic privilege? हाँ, क्योंकि हमें डॉक्टर Socio-economic. बनाया जाता है क्योंकि हमारे माँ बाप को होता है कि हमें एक स्टेबल जिंदगी मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जो कि जरूरी है, हम कैपिटलिस्ट माशरे के हिस्सा हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि एक प्रिविलेज जो है वो किस तरह से एक आर्टिस्ट का जो जर्नी है उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है? I think बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? You know, I come from a relatively privileged background, you know, and of course I know other musicians who also come from more or less privileged backgrounds in the South Asian context, as well as musicians who don't necessarily come from, you know, privilege के भी बहुत से aspects होते हैं. अभी तो हम सिर्फ, I assume आप जो कह रहे हो, you're saying that, you know, if you don't have to worry about money, right? Yes. Or about like immediately having a profession that takes care of that anxiety for you or that concern. But I will also draw your attention to so many musicians who have dominated not only Pakistan's musical landscape, but the region's musical landscape, who don't even come from urban culture. You know, I mean, I had the great opportunity to perform with the great Abida Parveen Sahiba on Coke Studio. And one of the great things that I admire about her is that she comes from rural Pakistan, and her music is the music of Sindh. And it is a music that has won over the entire world. You know, and in some ways it's so much more powerful than any privileged musician. जो मर्जी आप कर लें, वो आप उसका सामना नहीं कर सकते उस चीज का. इसी तरह आप देखें कि अभी भी हमारे यहाँ, and by हमारे यहाँ I mean generally हमारी region में, टिकटॉक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए बार बार आप देखते हैं कि gifted singers, gifted instrumentalists, people with gifts, they are able to constantly win, you know, the attention of audiences and potentially of patrons. Then they might get to appear on a program or have an ad or something or the other. But I would draw your attention to something else actually, which is I think the greatest privilege, if you ask me. You see, because मौका मिल जाना इस सोशल मीडिया की एज में जो है वो एक्चुअली इतना रेयर नहीं है जितना कि पहले होता था, राइट? अब गेटकीपर्स कम हैं. अगर आप टिकटॉक के जरिए या यूट्यूब के जरिए अगर किसी को मुतवज्जे कर लें ऑडियंस को, तो आपको वो अटेंशन जरूर मिल जाती है. द क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू सस्टेन अ म्यूजिकल करियर? I think that is the question that actually young musicians maybe should be asking themselves. And in that sense, I think the greatest privilege is apprenticeship, is what we call shagirdi, right? And that beyond having the money to pursue it, though of course that's also a part of it, I think asks you to give the most important years of your life. At some level, you have to be engaged with learning music. I feel, this is my personal opinion, and I'll be honest with you, I have seen अभी भी जो पाकिस्तान में उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं म्यूजिक के, उनके यहाँ जो बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, they're often not from very privileged backgrounds. And it kind of gives me a lot of hope because I see that it's the passion that keeps them going. And I believe that it's those kids who will have futures, sustainable futures, as music makers, as composers, as creators of ads, jingles, soundtracks, movie scores, you know, the long-term sort of thing, which I think is what we should really be thinking about. So I hope that answers your question in an interesting way. That has. Thank you so much. That has. Of course. Thank you. Thank you, Ali. We have 3 questions lined up. First of all, Hassan Bajwa, if he's there from Lahore, Pakistan. Yes, Hassan, I'm are here, you sir. there? Do you have any I'm here, comments or questions for Ali? And after that will be Tabinda and then Professor Mahmood Ayyaz. Assalamu alaikum, Sir Ali. I'm myself, Hassan Bajwa and Prof. We are the heads of the music club at King Edward Medical University. First of all, I would like to express how starstruck we are to have attention is what, or you are a big name. It goes without saying. It's a dream for us. We'll have you some time at KE. So I would like to cash in this opportunity and ask you, as young musicians, जैसे अभी आपने apprenticeship की बात की, for people like us to be very honest,
to have an apprenticeship like this or daily basis पे इतने hours dedicate करना music को, it is something very difficult for us given our type of studies and the amount of effort we have to put in. So what do you suggest to us with the limited time but the ton of enthusiasm that we have for music? So what can be the ideal way forward to us? And secondly, I think we as musicians are stuck at the point of doing covers and शायद थोड़ा scale change कर लें या mashups कर लें. We are quite limited to that. So how do we progress towards originality to create something eventually close to or mimicking Pasudi per se? And anything that you would like to add, suggest to us? Thank you, Hassan. Thank you for asking those questions. Very good questions, both of them. First question, कि आपको आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी दुनिया का बोझ जो है वो आप पे है. I understand, and this is true. Doctors are not only is it a very difficult, difficult तो नहीं कहेंगे, I mean not only is it a very demanding sort of pursuit and commitment, it also has a lot of ethical obligations attached to it, right? So you know, we are all very grateful to you, all of you, for pursuing your studies in the way that you do, and I hope that you pursue them with even more seriousness. I will say this, ये एक stereotype है बना हुआ कि जी आपको रोज 8 घंटे रियाज करना है, या ऐसे नहीं है. I think एक connection form करना है आपको. जो भी आपको, आप फर्ज कीजिए you like guitar music. It doesn't have to be rag music necessarily. Suppose you like the sound of guitar and the way it sounds, that you listen to musicians who use the guitar a lot in their music. Engage with it at the level of craft is what I'm saying. Right? एक होता है engaging with it at the level of fandom कि जी मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं दोस्तों के साथ बैठ के हम इसको सुन रहे हैं, हम जब ड्राइव पे हैं या अपनी जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या अपनी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में हम ब्रेक्स लेके सुनते हैं चीज को. ये एक फैंडम के लेवल पे है. एट द लेवल ऑफ क्राफ्ट ये है कि आप फौरन जाके यूट्यूब पे उस गिटारिस्ट को सर्च करें, आप जाके देखिए उनका कोई ट्यूटोरियल है, वो इवन इफ 15 मिनट का ट्यूटोरियल है उसको आप सुन लें. फिर आप अगले दिन अपनी एप्लीकेशन में, अगर आपके पास गिटार है या आपने बोरो किया है गिटार किसी से, तो आप कोशिश करें कि उस एप्लीकेशन को आप कनेक्ट करें किसी तरह से. अगर आप पढ़ सकते हैं कोई मजमून या किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ऐसे या कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं कि गिटार की ओरिजिन क्या है, गिटार कहाँ से आती है, गिटार का रिलेशनशिप जो है वो प्री मॉडर्न टाइम्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ क्या है, गिटार की मॉड्यूलेशंस जो हैं वो सितार से डिफरेंट कैसे हैं, you know, what can you do with the guitar? So what I'm saying is critical thinking, जिसको हम कहते हैं ना, critical thinking, उसको bring that into these interests. Critical thinking is not just for your professional pursuit, it is also for creative pursuits. I think that actually should answer both of your questions, right? Okay, how do we move towards originality? It will come from you, it will come from within you if you engage critically with music, right? Just as if you want to set up, say, a restaurant business, you know, you can engage critically with the story of food. What is the source of the materials that you are using? What is the history of dahi? You know, I was at this panel yesterday at Brown University, and this wonderful Indian speaker was talking about how तंदूरी चिकन जो है उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि तंदूरी चिकन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो दही है. दही के बगैर तंदूरी चिकन नहीं बन सकती. अच्छा, दही जो है वो इतना सॉलिड क्यों है, जरूरी क्यों है? और दही की स्टोरी क्या है? वो ये है कि जब पार्टीशन हुआ उसके बाद बहुत से पंजाबी जो है वो दिल्ली आ गए. तो वो जब दिल्ली आए तो वो अपने साथ बफलो लेके आए, क्योंकि पंजाबी जो है वो बफलो के साथ अटैच्ड है. तो बफलो मिल्क जो है उसका सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो दही है. तो वो यानी कि माइग्रेशन के जरिए, बफलो के जरिए, दही के जरिए चिकन को मैरिनेट करते करते तंदूरी चिकन जो है वो एक पंजाबी डिश बन के फिर एक्सपोर्ट होके जो है वो डायस्पोरा में जाता है, which is why today तंदूरी चिकन is the most popular dish on any desi restaurant menu in London, New York, wherever. Once you engage at that level, you know, and you can see the map and the infrastructure of what you are doing, then creating something new becomes that much easier and that much more interesting, because you are engaged at many levels with what you are doing, right? And as scientists, as doctors, you already know this. जिस तरह आप anatomy करते हैं किसी चीज की, आप anatomy को समझते हैं, आप गहराइयों में जाते हैं कि ये
ऑर्गन जो है ये फंक्शन कैसे करता है, राइट? एक तो उसकी मैनिफेस्टेशन है कि आपको एक तकलीफ है मरीज को, आप उसको सोचते हैं कि इंटरनली क्या हो रहा है, राइट? It's what you're trying to think. You're also thinking environmentally क्या हो रहा है, इसको what are the environmental conditions. Now we're all thinking about mental health and we're thinking about stress, we're thinking about psychological, neurological aspects. Why not bring all of those things to bear on the arts as well? If you engage at that level, I think for some reason हमारे यहाँ ये बन गया है तरीकाकार कि हम कहते हैं जी ये हॉबी की हद तक ठीक है, उससे आगे ये इसको मत लेके जाएं. आई थिंक अगर आप इसको क्रिटिकली एंगेज करेंगे विद द आर्ट्स तो उसमें भी गुंजाइश जो है वो इट्स नो लेस प्रोफेशनली, इमोशनली, सोशल इम्पैक्ट की गुंजाइश जो है इज नो लेस देन इन द other fields. And originality will also come when you engage at the level of critical inquiry. ठीक है जी. Thank you, Ali. I have to One say more that question, Lily J. Dr. Athar Saab, I have to actually run after this. I have another thing that to is go fine. So there is one more question from Tabinda. I'm sorry, we won't have any space or time for more. So Tabinda, go ahead. Okay, thank you. Ali, I want to thank you not only for your music, but also an idea that you put in my head right now. So I've been a physician practicing medicine for so long, and people like me who have got a really bad singing voice. लेकिन जो tone deaf नहीं हूँ मैं, I'm not tone deaf, but you know what? It made me think therapy and music. So when I talk to someone, किसी patient के साथ किस tone पर, किस level पर बात करनी है? Do you think someone can do a podcast teaching doctors कि किस level पर आप बात करेंगे? So that would be soothing to the patient even when you're breaking bad news. Like in the wards, we have a therapy dog who comes and patients can pet the dog. She's called Molly. और वो इतना खुश होते हैं, especially patients who have dementia and things like that. And we lose our patients sometimes because मैं NHS में काम करती हूँ. We've got such workload. तो कई बार मरीज बार-बार एक बात करते हैं या उनको तसल्ली नहीं होती है. तो is there any way we can link up how and what tone we speak at and किस level पर, किस सुर में? Thank you for asking that question. It reminds me of this conversation I was having yesterday with my friend Saud, who is a graduate of King Edward and now is practicing medicine at Brown University and is also a musician. And we were talking about how he was telling me, in fact, and I hope I don't get this wrong, but he was telling me that increasingly we are finding that there is a connection between the muscle memory that is activated by musical practice, right? Whether it's playing tabla with your fingers, any kind of rhythmic, percussive practice, and containing or beating dementia, Parkinson's, any other kind of degenerative process, and activating parts of memory and of muscle that language alone cannot activate. Right? So even beyond language, right, we are thinking about increasingly about the body as a site of memory, right? And I think what you're saying and what you're getting at is that increasingly we want to connect aspects of the non-sciences with aspects of the science, with our life in the sciences, or with our life in medicine, or with our medical sort of approach, which has been, to my mind at least, too fixated on surgical aspects, right, and surgical interventions. I think ये जो holistic किस्म की approach है, उसमें music and sound, which is beyond music, I think sound has a very, very, very potentially revolutionary role to play in all of that. So I personally I'm not there yet, but I will say this to you that again, going back to my apprenticeship, my Ustad many times has described to me, has performed for me, Ustad Sami, उनकी album है, आप Spotify पे सुन सकते हैं, कि जो colonial period से पहले के जो सुर हैं, जिसमें 49 microtones हैं एक single scale. अभी तो आपका कीबोर्ड सिर्फ 12 सुर गिन पाता. आवाज के जरिए 49 सुर जो हैं वो कम से कम 49 जो कि बगदाद में तय हुए थे in the 9th century by the musicologist Ibrahim Muslim, उनको हम किसी तरह से वापस लेके आए, उनको एक्टिवेट करें, उनके जो असरात हैं, जो उनके टाइम्स ऑफ डे हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं with the seasons and therefore with temperamental changes in temperament, उनके साथ अगर हम engage करें तो we have
all kinds of areas, uncharted, exciting, interesting areas in healing, in social life, in wellness that we can activate. So I'm very excited by all of this. I have to say thank you for your enthusiasm. I believe in all of you. I really believe in all of you. I believe in your, you know, you give me hope, and I hope that increasingly हम लोग forums बना सकें ऐसे, even if हम Zoom पे क्यों ना कर सकें, you know, but हम forums ऐसे बना सकें जहाँ पे people from different fields can connect and can share expertise and share ideas and cross-fertilize. I believe that that is where the beauty of our past is, and that's also where the beauty of our future lies, inshallah. Thank you, Ji. Thank you for having me. Thank you, Ali. Before you go, can I announce, and can we do a virtual presentation to the 3 winners of the contest? Ji, of course. So the first prize goes to Moeen Haider. It's a cash prize of 50,000 rupees donated by Tariq Gohar in the memory of his mother Hashmat Bibi. So this award will be presented to Moeen Haider by Ali Sethi and Professor Mahmood Ayyaz, who has honored us with his presence as well today. So first prize, Moeen Haider, congratulations. And the second prize, so can you congratulate Moeen Haider, please, Ali Sethi? Congratulations, Moeen Moeen Haider. Haider. May you have many more. Thank you. And Moeen, congratulations from my side as well. Excellent. Next prize is to Sameer Butt. Second prize, which is sponsored by Dr. Ziaullah in the memory of his mother Mahmooda Begum. It is for rupees 30,000. So can you say congratulations to Sameer Butt, please? Congratulations, Sameer Butt. May you have many more. Thank you so much, Ali bhai. And congratulations, Sameer. Very well done. Excellent. So third prize is Khalid Hussain, which is a cash prize of 20,000 rupees. This is donated by Dr. Anjum Bashir in the memory of his mother Salima Murad Music Award. Congratulations, Khalid Hussain. May you have many, many more. Yes, and I think that Khalid sang very well, and I hope that next time he wins this award as well. Well done. Thank you very much, Ali, for being here. I have to say that Hassan Badwa was not the only one who was starstruck. So I know that you have to travel, so we'll let you go. Thank you, and Khuda Hafiz, Ali Sethi. We'll continue the rest of the program, which I think there's not much more left. Is there anybody who wants to say anything? I must say I should welcome Dr. Asghar Naqi, who is a professor of surgery at the King Edward Medical University. And he has been very supportive of arts at the KE. And obviously, he's a very proficient surgeon as well. So thank you, Asghar, for being supportive. I think it was a pleasure attending this wonderful session. I must congratulate all of the participants and especially to you, Dr. Ayyaz. Thank you very much, Asghar Saab. So I think it is time to conclude because the cricket match may have started or maybe about to start. So what I will do is I will invite Dr. Sameer Butt, sorry, I think he's not a doctor yet, to do a live presentation. And I have to thank all the crew in the control room. There are 3 control rooms, one in Lahore, one in the UK, and one in Turkey. And so we'll acknowledge them. And Sameer will give a live performance. And this event is now concluded. Can you say a few words, Tabinda, and then we'll come to an end. Okay, thank you very much. I must say, I thoroughly enjoyed it, and I wasn't aware कि क्या level होगा participants का और क्या presentations का, but it was brilliant and well done, all of you. Prizes are very arbitrary, and you know it is how the judges feel at that time. You've all done so well, एक से एक बढ़ के हो. And I'm slightly sad कि
जो गर्ल्स थी उनको आपने जरा बाद में रखा, दे शुड हैव कम अहेड ऑफ द लैड्स, और उनमें से किसी ने विन नहीं किया, बट यू नो women always win, वो कभी भी नहीं हारती. So इसलिए well done to the women who were there and all the boys who tried so hard. और हम लोग तो उस टाइम के लोग हैं जब इतनी पाबंदियां थी कि हमारे लिए तो कोई हवा का जरिया नहीं था, तो ये एक छोटा सा रोजन है इतनी हब्स में. सो लेट इट आउट, एंड आई थिंक जो नहीं भी गा सकते उनको भी गाना चाहिए, और गाते गाते अच्छे हो जाते हैं. प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी गुड, एंड पीपल हु डिडंट डू you know the prizes, they did brilliantly well, they will do better the next time, you know. So well done all of you, and thank you very much Athar for organizing this. I hope we will be able to raise some money, and I would really support both the causes. तो please दोनों causes, एक किंग एडवर्ड के लिए है और एक for Pakistanis in general, they are both for Pakistan. और please आप लोग donate करिए, एक एक रुपया मैटर करता है because मिलकर बनता है, तो please do donate. So thank you very much and have a good evening, and I hope that Pakistan wins today as well. Thank you. Professor Mahmood, concluding remarks from you as well, please. Thank you very much. I am not a great music guy, and because you know surgeons को बहुत ज़्यादा मौसीकी का शौक भी नहीं होता और बहुत लगाव होता भी नहीं है, लेकिन anyhow I actually attended whole of the session, and I was amazed at the quality of the songs and the way they were actually sung by the young generation. That speaks of the immense talent which they have. And because you know, as a surgeon, we actually keep on learning new skills, and we keep on practicing it again and again and again, so that we should be proficient in our you know profession. And the same actually the same thing demands when you are practicing music as well, because you need to practice it again and again to become more proficient. And I'm sure that if these boys and girls who are actually participating today, if they spend more time in actually practicing what they do, they will really be you know remarkable. Because sometime or the other in their career they have to decide what they have to do, and I must tell them that they should do what their hearts actually want them to do. मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे माँ बाप के प्रेशर के साथ जो है ना डॉक्टर्स बन जाते हैं, बट डीप इनसाइड वहाँ पे कोई आर्टिस्ट बैठा होता है, कोई म्यूजिशियन बैठा होता है, कोई आर्किटेक्ट बैठा होता है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट बैठा होता है, और but I think that they should be able to continue with their passion. I actually am, and I was a very good sportsman. I always wanted to be a hockey player. So I played at the national level. I played for Pakistan Juniors. So I'm one of the very few people who are Pakistan colors as well. But मुझे बड़ा हमेशा ये अफसोस रहा कि मैं उस करियर को फॉलो नहीं कर सका, क्योंकि FSC आ गई, फिर मुझे वो उसमें ज्वाइन करना पड़ा. But anyhow, I am still happy being you know a doctor and a surgeon, और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है अपने प्रोफेशन में. बट ये जो साइड प्रोफेशंस होते हैं, अगर आप इनको परस्यू कर सकें किसी भी लेवल पे, क्योंकि जब डॉक्टर्स बन रहे होते हैं फिर आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप इन चीज़ों पे इतनी तवज्जो दे सकें, बिकॉज देन योर मेन एम इज टू एंड योर मेन जॉब इज टू बिकम अ good practicing clinician, and then actually become a good consultant, and then become a professor as well. लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से ये सब लोगों ने मिलके जो है ना इन अ टीम एफर्ट लाइक जो है ना ये सपोर्ट किया एक दूसरे को और म्यूजिक प्ले किया, और ये सारी की सारी चीजें जो ना दे आर कमिंग टुवर्ड्स वन कलेक्टिव एफर्ट, दैट इज टू improve the you know facilities for the flood victims in Pakistan. किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना पार्ट बहुत प्रोफेशनली प्ले कर रही है, और जैसा मैं पहले इसके बारे में जिक्र भी कर चुका हूँ. और जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर राइज कर रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली इन यंग वुमेन, और उनके लिए डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज होनी और वन स्टॉप जगह होनी जहाँ पे वो सब कुछ अपना आके करा सकें. एंड रिसेंटली आई विजिटेड बिकॉज आई केम बैक टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आफ्टर क्वाइट सम टाइम, और मैंने जो है ना जाके मुख्तलिफ सर्जिकल वार्ड्स, आई एम अ सर्जन, तो मैंने पहले सर्जिकल वार्ड्स को देखा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट देयर इज अ unit of surgery which is dedicated towards breast disease. बाकी सब जगहों पे भी काम हो रहा है, बाकी सब यूनिट्स में भी ब्रेस्ट सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ है. इट्स लाइक अ वन स्टॉप यू नो ब्रेस्ट क्लिनिक, जहाँ पे पेशेंट्स आती हैं आके अपना जो है ना उनकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एंड रिचली दे became short of this immunochemical stains. उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल फंड फ्रॉम आवर ओन यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने कहा कि आप अपना रिसर्च प्रोडक्ट बना के उसमें से फंडिंग ले लें, बिकॉज देयर प्लेंटी ऑफ फंड्स अवेलेबल इन दी रिसर्च ग्रांट्स एज वेल. तो उसमें से लेके हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई एम श्योर दैट विद योर हेल्प दिस प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू एंड दिस शुड कंटिन्यू. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग.
Thank you. Fantastic. Thank you, Mahmood. So I think we are signing off now. What I will do is ask Samir Butt. Actually, I must thank the jury as well before we leave, especially including Razi Hussain, Ashfaq Khan Sab, Seema Khan, and Ali Raza. You did a great job. Thank you. So we are signing off now. There's a live presentation by Samir, Dr. Samir Butt. He's a doctor after all. And put on a gallery view, put your videos on so that we can take a screenshot for the posterity. So if you put on your gallery view and put all your videos on before we go, and you can leave the meeting at any time you like. Samir Butt will now play live a guitar presentation, and I will roll the credits if I can master the technology. Samir Butt. So can you hear me? Am If I you can audible? hear, yeah, go ahead. We hear you. Well done. So this one is my original that I recently wrote, and it's on Spotify. It's called Bandeya. Nice. दर्द तुम अकेले यूं सहते रहे, अपने ही अश्कों में बहते रहे, कोई तो थाम ले हाथों में हाथ, चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते रहे, करो कुछ इंतजार, आने को है बहार, चलेंगे रोशनी में हम, होंगे अंधेरे खत्म, बंदेया तू तन्हा तो नहीं, बंदेया सब ही तो है यही, बंदेया दिल की परवाज़ पे, बंदेया अब उड़ चल तू कहीं, खामोशियाँ तुझको हैं खाती रही, तन्हाइयाँ तुझ पे सितम ढाती रही, छूटे हैं साहिल सदी, अब खुशियों के गम की मौजें तुझे बहाती रही, करो कुछ इंतजार, आने को है बहार, चलेंगे रोशनी में हम, होंगे अंधेरे खत्म, बंदेया तू तन्हा तो नहीं, बंदेया सब ही तो है यही, बंदेया दिल की परवाज़ पे, बंदेया अब उड़ चल तू कहीं. Thank you so much, everyone. Thank you. You can play on for a bit, Samir. Oh, you want to hear more? Yeah, your next best one. Okay, so this one is from KK. I would like to do that one. मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह, वो जरा सी दिल मेरे जगह तू, जरा सपना ले बना,
जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। वो Thank you, everybody. See you next time.